Good morning my dear students and my dear friends, this is Sudhir and welcome you all on today's class and in this video we will understand about the division facts. ठीक है, कल हम लोगों ने वार्म अप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था and we had understand about the basic things about the division के कुछ छोटी मोटी चीज़ों को पढ़ा था and we have already solved some basic questions. Okay, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था और समझने की कोशिश की थी. Now we will understand about the division facts. What is meant by facts? Fact is a certain rule or it is a properties of division. ये कुछ properties है division की जो हमेशा follow होती है, जो हमेशा, ठीक है. So what we have to do? We will understand about the division facts and open the page number 54. Everyone open the page number 54 and these facts are already written there and you have to copy that in your notebook but without what? That example. You have to write your own example. वहाँ जो लिखा है वो नहीं लिखना है, अपने मर्जी से कुछ नया एग्जाम्पल आपको वहाँ लिखना है, ठीक है. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द डिविजन फैक्ट्स. सो दीज आर certain properties of division. So we will read and then we will try to understand. What is the when the number is divided by 1, when the number is divided by 1, then the quotient is number itself. What is the meaning of this sentence? If the number is divided by 1, listen everybody here, if there is a number which is attached to by के बाजू में जो भी number होगा, always remember that is your divisor. That means what? If there is a number, let us suppose that there is a number, I am taking 25, okay, there is a number 25 which is divided by 1. Now I am dividing this number by 1. Okay, when you will divide the number by 1, the quotient is number itself. What is meant by quotient? Quotient means what? Very good. Again I have a question. The quotient is the resultant of division. Division के आंसर को क्या बोलते हैं? Quotient. That means the result or the answer of division is called as quotient. Answer of division is called quotient. Okay, so the answer, that means the quotient will be number itself. तो जो number है वो वापस आ जाएगा. 25 is divided by 1, so always remember that 1 का टेबल हमको 25 times पढ़ना पड़ेगा. Then only the 25 will come, है ना? So 125 is 25. Okay, so the number itself. When you will divide a number by 1, the quotient, that means the answer of division is number itself. Number वापस आ जाएगा, ठीक है? Like this, if the 67, it is a number, that means this is a divisor or dividend, this is a dividend. Always remember that the number which is inside is dividend. So number is divided by 1. If you will divide the 67 by 1, तो 1 का टेबल 67 times पढ़ना पड़ेगा. Yet, yes, the 67 will come in the multiplication table of 1. How many times? In how many times? 67 times. So we have to write 167s are 67 and you will subtract the 67 from 67, you will get 0 as a reminder. So this number is coming in the quotient. Got it? So what is the first division fact? If the number is divided by 1, if you are dividing any number by 1, you will get the quotient number itself. Quotient में हमेशा वो number वापस आ जाएगा. Okay, I hope you understand. Now we will proceed toward the next division fact. Okay, and that is when a number is divided by itself. Okay, listen carefully. When a number is divided by itself, नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर दिए हमने यहाँ पर, and then the quotient is always 1. Always, पर भाई सही सिंपल सी तो बात है. If you will divide, I am taking 17. Now if the 17 is divided by 17, नंबर को खुद से ही मैंने कर दिया डिवाइड. So 17 के टेबल में 17 आएगा 1 times में. That means 17 divided by 17 is always 1. When you will divide the number by itself, you will get always 1 as a quotient. Simple है. If you are dividing 150 को डिवाइड करना है,
150 से. That means what? We have to speak the table of 150 up to till 150. तो पहली बार में तो आ जाएगा, है ना. 150 1 जा 150 150 and you will get 0 0 0 as a reminder after subtraction. So what? When you are dividing number by itself, the quotient is always 1. Okay, बहुत सिंपल है. If you are dividing by 1, 1 से किए divide तो आंसर में आएगा itself. And if you are dividing by itself से डिवाइड करोगे, यानी खुद से डिवाइड करोगे, you will get the quotient as 1. 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा itself से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1. इट इज वाइस वर्सा, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं भाई साहब यहाँ पर. ओके, गॉट इट एवरीवन? इफ यू आर डिवाइडिंग द नंबर बाय इटसेल्फ, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1, एंड इफ यू आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 1, क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ. जलेबी बन गई है ना, गोल गोल. ओके, so the two division facts is completed, and now we will understand about the third one. ध्यान से, अभी confusion होगा, हाँ ध्यान से देखो. So here now we have to understand about the third division fact, and the third division fact is, ठीक है, listen carefully, read carefully. Okay, first of all we have to read this sentence carefully and we have to understand which is divisor and which is dividend. यहाँ बहुत बड़ा झोल है जहाँ जीरो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. तो ध्यान से देखो, when a zero is divided by any number, listen carefully, zero is divided by any number. by के बाद वाला जो होता है, whatever it is which is attached to by is your divisor. by के चिपक के लिखो, हाँ, by के बाद में जो भी नंबर, जो भी आपने लिखा है, that is your divisor always. by 1, so 1 is your divisor here. Okay, so listen carefully, 0 is divided, किसको डिवाइड किए? 0 को डिवाइड किए. that means here the 0 is your dividend. got it everyone? if the 0 is inside, that means it is divided. we are dividing this 0 को डिवाइड करना है by any number. let's take 5. here I am trying to divide the 0 को करूंगा डिवाइड 5 से, हाँ, then the quotient is always 0. that means what? ध्यान से समझना, हाँ, 5 का टेबल बोलो up to till 0. 5 का टेबल, we have to speak the multiplication table of 5 up to till 0. 5 का टेबल बोलो जब तक 0 नहीं आता. so now we know that the multiplication in the multiplication table of 5 के टेबल में 0 आता है क्या? But that is my first question. Can 0 will come in the multiplication table of 5? Yes. 5 zeros are 0. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना. So what we will do? We will write zeros are 0 and here is also 0. That means if you are trying to divide the 0 by any number, you will get quotient as 0 always. कुछ नहीं मिलेगा भैया. if you are dividing the 0, that is your 0, divided by any number, कोई भी नंबर हो, I am taking 123, answer is 0. got it? if the 0 is divided by any number, whatever the number it is, the answer will always 0. that means the quotient will always 0. दिमाग में गया ना? हाँ. आप देखो ध्यान से, कंफ्यूजन कहाँ होता है? लिसन केयरफुली, देयर इज अ लास्ट डिवीजन फैक्ट एंड दैट इज डिवीजन बाय 0. देखो मैंने क्या बोला, बाय 0, डिवीजन बाय 0. बाय के बाद मैंने क्या लगाया? डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट इन स्टैंडर्ड थर्ड, है ना. division by 0 is meaningless. that means what? the number which is attached, एकदम चिपक करके, attached to be by, to a word which is by, is always dividend or divisor. अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? that is your divisor. हाँ, by के पास में जो नंबर है, that is your, always remember that is your divisor. okay,
So when the divisor is 0, that means what? If like this situation, अगर situation ऐसे आ जाए, first of all I want to see that it is visible in camera. Okay. Okay, if you are writing 0 here as a divisor and there is any number towards inside, that means if there is a number inside, that means your dividend is 131 and the divisor is 0, it is meaningless. ठीक है, 0 से आप कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. That is the meaningless. This is a sign of meaningless. ये meaningless का sign है. That is the symbol for meaningless. Okay. So understood everyone? Listen carefully. If the dividend is 0, the answer is 0. If you are trying to divide the 0 by any number, you will get 0. But if you are dividing by 0, dividing the 0, there is by 0. Here is by any number. हाँ, any number 0 को divide करोगे तो 0 आएगा. But you are trying to divide by 0. उस दूसरे नंबर को आप 0 से डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू डिवाइड 131 विच इज द नंबर हियर बाय 0, दैट इट इज ऑलवेज मीनिंगलेस. ये बाय के बाद में अगर 0 रहा तो आंसर हमेशा आपका मीनिंगलेस ही आएगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? दैट इज द फिफ्थ डिवीजन फैक्ट. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट that properties of division after this one, after these three. Okay, I hope you understand. So please please note down in your maths notebook, and then we will proceed towards the next division fact. ठीक है, और 2 बचे हैं तो हम लोग उस दोनों को इसके बाद समझेंगे. तब तक आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए. ओके, okay students, so now let's proceed toward the next division fact, which is a fourth division fact, and this is the fifth division fact. Okay, we have already learned about this fact in factors and multiplication, multiples and factors. Okay, there is a one chapter we have recently completed, that is a multiples and factor, and we have already learned about this multiplication and division fact in that chapter also. Okay, so बस 2 मिनट का ये तो चलो देखते हैं. Okay, so what is the fourth division fact? That means the fourth property of division is, let's first of all we have to read, division and multiplications are related. So I already told you that the multiplication and divisions are related with each other, and सुनो ध्यान से, additions and subtraction is also related with each other. कैसे? Because we know that in the addition we have to add the number. Yes, हम लोग addition में क्या करते हैं, numbers को add करते जाते हैं. If you are adding something in something, कुछ है उसमें आप एडिशन करते जा रहे हो, दैट मीन्स योर रिजल्ट विल इंक्रीजेस, आपका आंसर बड़ा होते जाएगा. इफ यू आर एडिंग 5 and 2, सो यू विल गेट 7. यस, अगर आप 5 और 2 को प्लस करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन यू आर एडिंग अ 2 स्मॉल क्वांटिटीज, यू आर गेटिंग अ बिग क्वांटिटी इन द एडिशन. एडिशन में क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है आपका आंसर. यस, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन? What is the answer of addition? What is called the answer of addition? Answer of addition is called as sum. Sum मतलब क्या होता है, answer of addition. And similarly, the answer of subtraction is क्या है, difference. Yes, उसको difference बोलते हैं. So the addition and subtraction, the addition and subtraction both are opposite operation of each other. Opposite operation means what? यहाँ हमारा आंसर इंक्रीज होता है, यहाँ हमारा आंसर डिक्रीज होता है, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं. दिस बोथ आर रिवर्स ऑपरेशन, रिवर्स है एक दूसरे के, है ना. सिमिलरली द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर. रिवर्स ऑपरेशन मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लीकेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, है ना. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. ठीक है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी 2 numbers, let us suppose that you are multiplying the 6 and 7, that means you are adding 6 7 times, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं you are adding 7 6 times, and then you will get 42. That means when you are multiplying the numbers,
बैकग्राउंड में रिपीटेड एडिशन चलता है, देन यू आर गेटिंग 42. ओके, एंड इन द डिवीजन, डिवीजन इज व्हाट? डिवीजन इज बेसिकली डिवीजन इज व्हाट? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम लोगों ने स्टैंडर्ड थर्ड में पढ़ा था. वी हैव लर्न व्हाट? वी हैव लर्न डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना. सो दीज टू आर रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं. दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन. ओके, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है. ठीक है. एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज टू डिवीजन फैक्ट. एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ओके, फैक्ट हैज अ टू डिवीजन फैक्ट. हर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के दो डिवीजन फैक्ट्स निकलेंगे. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन दी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स that we have to revise. Okay, now as you can see here there is a two numbers 6 and 7. मेरे पास दो numbers है, that is 6 and 7. Okay, so what is happening here? I am multiplying 6 and 7. मैंने 6 और 7 को multiply कर दिया, then I am getting 42 as a product. Yes, that means the product of 6 and 7 is 42. 42 is the product of 6 and 7. And what is another name given to the product? Multiple. 42 is a multiple of 6 and 7, and these two numbers, which one? 6 and 7 are the factors of 42. Again, 42 is a multiple of these two numbers. That means the 42 is a multiple of 6 and 7, and this 6 and 7, these two numbers are the factors of 42. Got it? Okay, and that is a product. Now listen carefully. We have already learned about this division fact in standard third. What we will do? We will find the two division fact from this multiplication fact. Okay, we will divide this product by one of the factor. Okay, so let's take 42. 42 को करता हूँ मैं divide 7 से. So when I will divide the 42 by 7, what will happen? 7 6 are 42. 7 6 are 42. When you will divide the 42 by its one of the factor, you will get the another factor as an answer. That means आपको quotient में मिलेगा दूसरा वाला factor. This 6 will come here. And when you will try to divide this 42 by 6, तो आएगा 7. That means the 7 will come. That means what here? 6 7s is 42. Okay, so these are two division fact. That means what? If you are dividing the product, if you are dividing this number by one of the factor, अगर आपने किसी product को उसके factor से divide किया, you will get its another factor. तो दूसरा factor मिलेगा. हम लोगों ने पढ़ा था division में, multiplication and multiples and factors में ऐसे. How to find the factor? Listen carefully. ठीक है? How to find a factor of number using the division method. Let us suppose that is 42. Okay, 42 is here. 42 is the product and I am dividing by 7. अगर मैं इसको 7 से divide करता हूँ तो 7 6 is 42. You will get 0 0. Here the 42 is a product and the product is divisible by its factor. And if I am trying to divide, अगर मैं किसी number को यानी कि 42 I am taking here, इसको 7 से डिवाइड करूंगा, विच इज अ फैक्टर. 42 का 7 ऑलरेडी फैक्टर है. 7 6 is 42. 7 के टेबल में 42 आता है. ध्यान से सुनो, 7 के टेबल में 42 आता है. दैट मीन्स व्हाट? द 42 इज अ मल्टीपल. जिसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में आया तो वो मल्टीपल बना, है ना. सो 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 7 इज अ फैक्टर ऑफ 42. सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर को फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं. Then you will get the another factor और दूसरा भी factor मिलेगा and that is 6. So I told you that when you are finding the factor of any number, you will get like this. If you are getting a 0 here, that means what? That means the quotient as well as your divisor both are the factors. ये दोनों factor हैं. If I am dividing the 42 by 6, अगर मैं इसको 6 से divide करता तो 7 आता. 6 7s are 42, 7 6 is 42. That means जब भी आप किसी नंबर को if you are dividing this 42 by 7, किसी
नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द अनदर फैक्टर, उसके बाद और एक नया फैक्टर आपको मिलेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिड इन डिविजन मेथड ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। समझ में आया ना? हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है। सो मैं इसको मिटका देता हूं। ओके, सो नाउ हियर it is done. So that is a fourth division fact, and the fifth division fact, which is a last division fact, and that is division by zero, by के साथ में zero. Okay, that means what? The zero is your divisor. Yes, the zero is your divisor. Then the answer is meaningless. That means the quotient will be meaningless. So how to write? Let us suppose that I am taking a number 15. Okay, this 15 is a number and I am dividing this 15 by 0. That means like this. Here the 0. That means the next number is your divisor. ये आपका divisor है. It is visible in camera. Okay. Divisor. Okay, this 0 is divisor and 15 is your dividend. In this case, the answer, that means the quotient is always meaningless. And you don't have to write the spelling of meaningless every time. वो meaningless की spelling बार बार नहीं लिखना है. What we will do? We will write directly a symbol of meaningless. This is a infinity. Infinity, पता है infinite? Infinity. Yes, we are right. We are using the word infinity. There are multiples number of, sorry, there are infinite number of multiples. That infinite is actually a meaningless. हम लोग कितने multiples find out करेंगे? Yes. So that is a symbol for meaningless or infinite. ठीक है, zero आया तो यहाँ पर infinite आ जाएगा. That means what is the meaning of that meaningless? Zero का टेबल पढ़ना बोलना है. We have to speak the multiplication table of zero up to till 15. Zero का टेबल शुरू करो बोलना. 15 जब तक नहीं आता. 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 0 0 0 0 0. करोड़ों बार भी बोलोगे तो 15 नहीं आएगा. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में भी पहुंच जाओगे. इफ यू आर स्पीकिंग 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 10,000 टाइम्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, वहां तक भी पहुंच गए तो भी कभी लाइफ में 15 आने वाला नहीं है. दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इफ यू आर स्पीकिंग द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ जीरो, यू विल नॉट गेट 15. आने वाला ही नहीं है. दैट मीन्स दैट इज द मीनिंगलेस. इसको डिवाइड करना सर में दर्द करना है, इसको मत करो. राइट डाउन देयर मीनिंगलेस. दैट इज द सिंबल ऑफ मीनिंगलेस. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, एंड टाइम थोड़ा सा बचा नहीं है. सो यू हैव टू सॉल्व द मेंटल मैथ्स विच इज ऑन पेज नंबर 54 पेज नंबर पे कुछ क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है. And from tomorrow or day after tomorrow we will start revision from first chapter. So everyone get ready for test. I will take your test anytime. Okay? तो चलिए शुरू नहीं करते हैं. Quickly note down in your maths notebook and have a good day. Bye bye. If you have any queries regarding anything, so you can write in the comment box or you can send me a message. And the student, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर I don't understand the estimation. Okay, I am going to make a estimated product, estimated sum and estimated difference. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है. अब ये डिवीजन भी हो गया, सो वी विल फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट ऑल्सो. तो मैं एस्टिमेशन से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, जिसमें सिर्फ एस्टिमेशन की बात होगी, जिसमें एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड, एक नया आ गया क्वोशंट डिवीजन में, तो वो चारों मैं एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा. ठीक है, तो हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर एंड नोट डाउन दिस इन योर मैथ्स नोटबुक. ठीक है, आप अपने मैथ्स नोटबुक में इसको लिख लो.